अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। कैमरास किस कदर बच्चों के बंद है भाई, माशाल्लाह। वे बा क्या इरादा भाई साहब। जी। और आप लोग नंबरात दीजिए, हर बच्चे को नंबर दीजिएगा। जिस बच्चे ने अगर ऐसा हुआ कि नंबर वो दूसरे को नहीं दे पाया तो उसका रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है। रिजल्ट उसी बच्चे का काबिल कबूल माना जाएगा जिसने सारे ही स्पीकर्स को नंबर दे रखे होंगे। ठीक है। जी, हालांकि अभी बच्चे नहीं आए हैं और कोई नहीं, चलिए। आप अपने पास कापी कुछ भी रखिए, ठीक है। ब्रदर तस्लीम को बुलाइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। We praise him and send blessing upon his noble messenger. After that, honorable teacher and my dear class fellows, today I stand before you to speak on a very beautiful topic, the importance of helping others. My dear friends, in Islam, helping others is not just a good habit. It is core part, part of faith. The Quran and the teachings of Prophet Muhammad Sallallahu strongly emphasize kindness, compassion, and service to humanity. Allah states in the Holy Quran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Worship Allah and associate nothing with Him. And two parents do good to the relatives and the orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor further away, the companion at your side, and the traveler, and whom those whom your right hand possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. Allah teaches us in this ayah humanity and helping others, whoever they are. Like this, our Prophet Muhammad Sallallahu said, وَعْبُدُ اللَّهِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Allah continues to help a person as long as the person help to help to his brother. And our Prophet Muhammad Sallallahu said, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. The best of people are those who are the most beneficial to others. So, we should be ready to help others sincerely for the sake of Allah. By doing so, we should only improve the life, so we prepare success for ourselves inward and hereafter. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। प्लीज नेक्स्ट स्पीकर फातिमा कुरैशी। कम ऑन द स्टेज बेटी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। हाँ भाई, उनके नंबरात लिखिएगा सब लोग। ब्रदर तस्लीम के। ठीक है आपको सबके ही मार्क्स देने हैं भाई साहब। अगर किसी के छोड़ दिए तो आपका वो रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तवाजुन ही नहीं रहेगा। तो कुछ को दे दिया आपने, कुछ को नहीं दिए, तो कैसे सिक्स निकालें आपके में से फिर हम। ठीक है, इसलिए जरूरी है, चाहे दो बच्चे रिजल्ट लिखेंगे, उन दो बच्चों के रिजल्ट में से सेलेक्ट करूंगा मैं। जितने बच्चे बोले हैं सबको आपको वो देना है। क्या बोलते हैं, नंबरात। ठीक है, तभी काबिल कबूल होगा। नंबरिंग करिए 1 2 3 करके इस तरह। प्लीज बेटी फातिमा। सर मुझे मालूम नहीं था कि आज नंबर दिए जाएंगे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ बनाया था। हाँ मेरा बेटा, कोई बात नहीं, बोलिए, शाबाश।
In Islam, helping others is highly valued and considered a form of worship. The Quran and Hadith teach that even a small act of kindness like giving charity or some comforting someone are rewarded by Allah. Helping others not only benefit them but also purifies our heart and brings blessings. A true believer always supports those in need, knowing that every good deed is pleasing to Allah. माशाल्लाह, मेरी बेटी अच्छी बच्ची। जी नेक्स्ट, खालिदा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सलाम। Good evening to all of you, respected teachers and dear friends. Today my topic is importance of helping others in the light of Islam. Islam places great importance on helping others and serving humanity. Helping the poor, the needy, or anyone in difficulty is considered a noble act and a form of worship. Allah commands Muslims in the Holy Quran to support orphans, widows, travelers, and the helpless. The Holy Prophet Muhammad said that the best among people are those who are most beneficial to others. Helping others strengthens brotherhood, removes hatred, and creates peace in society. It also brings Allah's mercy and success in this world and the hereafter. Thus, Islam teaches Muslims to always help others with sincerity and compassion. Thank you. Okay. Who is coming next? No. इनका माइक बंद करिए बेटा। आइए भाई। आप लोग ने सोचा कि वो कल जुमा है, ओ सॉरी सैटरडे में। सैटरडे में आपका जब टाइम हो जाएगा उसी वक्त तक है भाई साहब टाइम। ठीक है, 2 दिन इसीलिए दिए गए हैं। जिस बच्चे का वक्त आएगा पहले तो मैं उसको बुलाऊंगा, टाइम ओवर होते ही वही कंक्लूड उसी में वो शामिल होंगे, वही बच्चे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग या तो उसी एतवार से आइएगा। ठीक है जी। जी आपका असल डे तो ये है, वो तो जो बच्चे बच जाएं वो है उनके लिए क्या बोलते हैं सैटरडे। असल तो ये है आपका स्पीच डे टुडे। ओके, इनवाइट नाजिमा प्लीज। नंबरात लिखिए आप लोग। नाजिमा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम प्लीज। My dear teacher, dear Zakaria sir, and my dear brothers and sisters, today I would like to speak about topic in the helping others in the light of Islam. Islam teaches us that helping others is not a just good habit. It is a ibadah, a form of worship. In Islam, a good person is that who brings comfort and ease to people around him. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Suratul Baqarah, chapter number 2, verse number 195. Ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. And do goods. Surely Allah subhanahu wa ta'ala loves that who those who do good. In Hadith, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Ahabbun nasi man yanfaun, ahabbun nasi ilallahi yan ahabbun nasi." Sorry sir, Hadith भूल गई। कंटिन्यू शाबाश। Ahabbun nasi ilallahi man yanfa'uhum. The most beloved people to Allah, those who are most beneficial to people.
Allah subhanahu wa ta'ala teaches us in Quran that Allah subhanahu wa ta'ala loves those people who help others with sincerity. My dear brothers and sisters, helping others is not only does not only giving money to others, but it means speaking kind words to others, giving um, pray to others, and help needy and weak person. Nabi sallallahu alaihi wasallam says uh, in hadith, सर हदीस भूल जाती है कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन बता दें बाबू। जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, मैं क्या अल्लाह ना जी जी ट्रांसलेशन बताऊंगी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says Allah subhanahu wa ta'ala helps his slave as long his slaves helps to his brother. May Allah subhanahu wa ta'ala make us to help other with our actions, our words, and our prayers. And let's become for our society a good person and a kind person. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who help others and earn his pleasure. Amin summa amin. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, सिद्रा समर प्लीज। हाँ भाई, नाजिमा को नंबर दीजिएगा आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। My honorable respected teacher Zakaria sir and distinguished friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank God for Allah for this golden opportunity. And then I am very thankful to my respected teacher for giving me such a wonderful chance to speak on this topic. Today my topic is the importance of helping others in the light of Islam. So I am going to speak somewhat about this topic. Dear friends, those whom Allah has given a position in society should definitely help the weak in their legitimate affairs. Allah has also commanded cooperation in good deeds in the Holy Quran. And in the authentic hadith, the Messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam has strongly emphasized helping his Muslim. Listen, who is present here. Islam teaches us to help others. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always helped others who need it and was helpful to others. Dear audience, what do we get out of helping and aiding those who are in need? So listen, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrated that the Messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Whoever fulfills the worldly needs of a Muslim, Allah will fulfill his needs in the hereafter. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. And whoever reveals a hardship for a Muslim, Allah will relieve him in this world and the hereafter. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. And whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and the hereafter. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. And Allah will continue to help his servants as long as he continues to help his brother.
Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. This verse and hadith should be narrated to those whom Allah has honored, and in the light of it, they should be asked for help. Do you know, friends? Allah Almighty has given man the status of the best of creations, and the purpose of creating man is to awaken in the heart of a human being a feeling of love and compassion for another human being. This feeling teaches man high morals, you know, understanding and feeling the pain of another and treating it as an act that elevates and distinguishes humans from the angels. My brother and sisters, what do you think of making etikaf in the Masjid al-Nabawi for 30 days? 30 days of reading Quran, 30 days of making du'as in the Masjid al-Nabawi, 30 days of praying some janazas, 30 days of praying 5 daily salawah in congregation in the Masjid al-Nabawi, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the salat over there is better than 1,000 salat done somewhere else. But do you know what's better than that? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد الشهر يعني المسجد النبوي. For me to walk with my brother regarding a need of his more beloved to me than staying the Masjid al-Nabawi isolating myself for a whole month. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar. Friends, it's a place of think. It's a place of think. How are we doing today? In which direction are we going? Are these the teachings of the Prophet? No. Isn't the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Remember, friends, neediness is not sustainable without three things. Think of it as small so that he may be great. Hide it so that it will automatically appear, and hasten it so that it may be pleasant. There are many ways to help others, to relieve someone's pain, to say something nice, to help the poor, to sponsor an orphan, not to cause harm to others through oneself, to be a support for the helpless, feeding the hungry. There are countless ways in Islam through which we can help others. May Allah grant us correct understanding and be helpful to others. Make people fulfill their rights. Ameen summa ameen. Now I conclude my speech. Jazakumullah for listening me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जी सिद्रा को नंबर नाउ मैं इनवाइट शाहिद कम ऑन द स्टेज. अभी नंबर देना मत भूलिए बेटा किसी बच्चे को, ठीक है? Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher and my dear friend, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I would like to speak on the importance of helping others in the light of Islam. Islam taught us to be kind and helpful to others. Helping people is an important part of our life. A good Muslim is one who's caring for others and helping them in time need. The Holy Quran and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us help to poor and hungry, they needy, and then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the West person is one who's help others most. Helping others does not always means giving money. Even some small actions like sharing food and helping our parents, be kind to our needy and speaking politely are good. Decide in Islam when we help others,
Allah is happy with us helping people make society peaceful and brings love and unity people. In conclusion, Islam taught us to help others in even help us sorry sir help us every possible way helping others become better Muslim and better human. Thank you, sir. नेक्स्ट नाउ मैं इनवाइट शकीरा, कम ऑन द स्टेज। हाँ भाई, जिस बच्चे का कैमरा बंद हो उसको लिखिएगा कैमरा ऑफ है आगे। शकीरा प्लीज। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड़िया प्लीज। First of all, thank you Allah and respected teacher and all giving me this opportunity to speak. Our topic is helping others in Islam. Islam emphasizes compassion and mercy as central values. Helping others is a way to earn Allah's pleasure. The Quran encourages believers to support the needy and appreciated. Charity profiles wealth and the heart. Zakat is the pillar of Islam, showing the duty of help others. The Prophet Muhammad ﷺ said, "The best of people are those who are most beneficial to others, assistance others, strengthens and unity in the Muslim community, helping the poor, poverty, arrogance and greed. Acts of kindness are considered ongoing charity, supporting others, bringing blessing in one's own life. Islam teaches the feeding the hungry is the noble deed. Helping relatives and neighbors is highly rewarded. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam encourages smiling as a charity. Serving others reflected truth, faith, and good characters. Helping others is form of the worship when done sincerely. Islam values both material and emotional support. Assisting others in difficulty is way to gain Allah's forgiveness. Helping others spreads peace and harmony and society. It reminds us of equality and brotherhood in Islam. Unlimitedly helping others is a path of Jannah. Thank you, sir. Okay. Now may I invite Rida. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam, please. Helping others holds a very important place in Islam. A very cold good evening to all. Assalamu alaikum. My name is Rida, and today I am going to speak on a topic importance of helping others in the light of Islam. First of all, I would thank to Allah for this golden opportunity. Then I would thank to my honorable teacher, Zakaria sir, to speak on a topic. Helping others holds a very important place in Islam. Islam is a religion of peace, kindness, and compassion. It teaches Muslims to care for humanity and to help people without expecting anything in return. Allah has repeatedly commanded believers in the Quran to help the poor or needed, the sick, and those who are suffering. The Holy Quran, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
was the best example of helping others. He always helped the weak, feed the hungry, and show mercy to all, even to these animals. He thought that the best among people are those who are most beneficial to others. According to Islam, helping others is not limited to giving money only. Kind words, a smile, guidance, and emotional support are also considered acts of charity, sadaqah. Islam has made charity an important pillar through zakat, which helps reduce poverty and creates balance in society. Besides zakat, Muslims are encouraged to give sadaqah at all times, helping others strengthens brotherhood, love, and humanity among all peoples. It removes hierarchy and selfishness from society and promotes peace and harmony. Helping others also bring great rewards from Allah. Allah promises that through who help others in this world will help him in times or need. Such good deeds bring success not only in this life but also in hereafter. A society where people help one another because strong, just, a peaceful is conclusion. Islam strongly emphasizes helping others as an moral and religious duty. Every Muslim should try to help others according by their ability. By following this teaching of Islam, we can make a world a better place to live. Whoever saves one life, it as if he always saved all mind. Thus, Okay. Islam teaches us helping others is the best way to please Allah and lead a caring society. That's all from my side. I hope you will enjoy my speech. ओके बेटे रिदा, हाँ नाजिमा गुड़िया बताइए बेटा, बोलो प्लीज। सर एक बार और बोलना चाहती हूँ सर, नंबर के लिए नहीं, बस ये देखना चाह रही हूँ मैं बोल पाऊँ। मैं अपने में जब बोलती हूँ मुझे पूरा सब बोल पाती हूँ सर, कैमरे के सामने थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है। अच्छा तो अभी रुको बेटी, ये शेख बच्चा आया, इसको बुलवा लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपके जी तो नंबरात दे दिए गए हैं, ठीक है। नाजिमा के तो लिख लिए थे आप लोगों ने नंबरात सर, तो। मेरे नंबर नहीं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए बेहतर है बाबू। शेख आइए बेटा, नाजिमा रुकी बेटी। शेख माइक खोलो बेटा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Good evening, everyone. My name is Sheikh. First of all, thank you for giving me this golden opportunity to speak about in front of you, especially Zakaria, sir. My topic is the importance of the helping others in Islam. Helping others is very good habit in helping others in Islam. When we help the people, we feel very happy. We can help our parents at the home and friends at the school. We should also be kind and ready to help anyone in the need. Even a small helping can make a big difference in someone's life. People people who help the others are loved and respected by everyone. Helping others makes our world a better people to live. It is the last but not the least. Also be kind and helping. Thank you. ओके बेटा। नावे बच्चों, कोई और आ रहा है स्पीच के लिए? कल के बारे में लेकिन मैंने आपको जाब्ता बता दिया है। कल जो आप लोग आएंगे तो वक्त तक, जब तक वक्त रहेगा तब तक मैं सुनूंगा। उसके बाद कोई बच्चा आता तो फिर व्हाट्सएप पे मंगाऊंगा उसकी स्पीच, ठीक है जी। अगर कोई आए तो आओ, वरना मैं नाजिमा को बुला लेता हूँ। अक्सर को बुलाइए भाई। आप लोग नंबरा जरूर देते रहे भाई, जो जो बोल रहा है बच्चा।
कैमरा बंद हो नहीं हो, आप नंबरात दें। अक्सा आओ बेटे। Assalamu alaikum, sir. मसला। Islam is one of the major religions in the world. The followers of Islam are called Muslims. Islam is a religion that started off 140 years ago in a palace called Makkah. हाँ The बेटे, few अक्सा आपका टॉपिक क्या है बेटे? Sir Islam. नॉट इस्लाम। इस्लाम तो टॉपिक ही नहीं है बेटा। आपने टॉपिक पे तैयारी क्यों नहीं की मेरी बेटी? देखना चाहिए ना मेरे बेटे। Yes, sir. टॉपिक पे तैयारी होनी चाहिए। और आपने वैसे भी कैमरा बंद करके आप वो कर रहे हो। आप तो कैमरा खोल लेती हो बेटे, तो खोल के किया करो आप। ठीक है, इसको तैयारी करके लाना। चलो आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। कल आप तैयारी करके लाना उस पे। चलिए Yes, बेहतर है। sir. हाँ नाजिमा गुड़ी आओ, आप आनी थी, आओ। नाजिमा इनवाइट बेटा। जी। हाँ भाई, नाजिमा के पहले नंबर आज चढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वैसे ही बोलने आ रही हैं, ठीक है। जब कोई नहीं आ रहा तो इनको बुला लेता हूँ। आओ बेटी। Respected teacher, dear Zakaria sir, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I would like to speak about topic helping others in the light of Islam. Islam teaches us that helping helping others is not just a good habit; it is an ibadah, a part of worship. A true Muslim is the one who brings comfort and ease to people around him. Allah subhanahu wa ta'ala says, Suratul Baqarah, chapter number 2, verse number 195. Ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. And do goods. Surely Allah subhanahu wa ta'ala loves those who do goods. This verse remind us that Allah subhanahu wa ta'ala loves those person who help others with sincerity. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in hadith, Ahabbun nasi ilallahi anfa'hum linnas. The most beloved people to Allah are those who are most beneficial to people. Dear brothers and sisters, helping others doesn't mean to giving money others, but sometimes it means speaking kind words, sharing knowledge, making dua for someone, and help needy and weak person. Allah subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. That Allah subhanahu wa ta'ala helps his slaves as long the slave helps his brothers. This hadith teaches us that when we help others, Allah subhanahu wa ta'ala himself helps us when we are in difficulties. My dear brothers and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala make us to help others with our actions, our prayers, and our words. Let's become a source of kindness, mercy, and hope for our society. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those people who help others and earn His pleasure. Amin summa amin. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khairal jaza. आमीन जी। तो बच्चों, बाकी लोग आप कल ही लेकर आएंगे। चलो साहब, कल ही सुनेंगे, कोई मसला नहीं है। जी हाँ भाई, जिन बच्चों को नेम लिए गए थे वो अपने अपने एड्रेस मुझे भेज देना बाबू, ठीक है। फुल एड्रेस भेज दीजिएगा, अपना नेम, और मतलब जिस नाम पे मंगानी है, अपना नेम का मतलब वो।
ठीक है, महल्ले का नेम, गांव का नेम, और शहर का नेम, पिन कोड। ठीक है, वो सब आप मुझे भेज दीजिएगा। और कल आप में से सभी बच्चे जितने भी हैं, वो जो सिचुएशन वाली जो बुक है वो आ चुकी है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, सभी लोग उसको ऑर्डर कीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए मस्ट है भाई साहब। वो किताब वैसे भी बहुत काम आएगी आपके, सच में बहुत काम आएगी। मतलब एकदम उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वो। ठीक है, मतलब वो जो बुक है उसमें आखिर में और भी बेहतरीन बेहतरीन स्टोरीज और सेंटेंस, स्टोरी टाइप सेंटेंस की आपके तो प्रैक्टिस नहीं हुई बाबू। उसमें मैंने सारे टेंसेस को घेर रखा है, इवन मॉडल्स को भी, कैन कुड शुड हैव, इन तक को घेर रखा है मैंने उसमें। ठीक है, आपको मौका नहीं ऐसे में। है क्या कि 6 महीने, आप समझो 6 महीने बहुत हैं। 6 महीने कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ये तो आपको एक राह दी जाती है बाबू, खुद मेहनत करके आपको आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, तो वो हर बच्चा ऑर्डर कर लेना उस बुक को। ठीक है, जितने भी आप क्लास में हो, तो आपके लिए किताब मस्ट है वो, और सेंटेंसेस वाली 2 बुक आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, हर हाल में। ये लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, देखो, हर हाल में, चूंकि अंग्रेजी के स्टूडेंट हो, वो 2 बुकें नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। अल्टीमेट है भाई वो। तो इसलिए आप बस हर बच्चे के पास दोनों किताबें होनी चाहिए, वो जो हमारी सेंटेंसेस वाली है वो भी, और ये जो आज आई है, ये मैं आपकी वीडियो डाल दूंगा उसमें ग्रुप में। ठीक है, जो स्टोरी टाइप और ये सिचुएशन वाली जो बुक है। ठीक है, तो ये आप में से हर बच्चे के पास होना लाजमी है। अच्छा, शाहिद क्या कहने बुलाइए भाई। शाहिद तो इंडिया आ रहे हो बाबू, बुलाओ भाई। आओ। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली मैं इंडिया तो अभी लेट हो जाऊंगा आने में। बट मैं आपको एड्रेस देता हूँ घर का, फिर कैसे, या फिर आप हाँ, डायरेक्टली डीएचएल से मेरे पास भेज सकते हैं क्या सर? नहीं बाबू, अभी ना आउट ऑफ कंट्री का कुछ निज़ाम नहीं बन पा रहा है, अभी वक्त लगेगा। मेरे को तो सारी किताबें चाहिए। मिल जाएगी तो घर भेज दूंगा ना वहीं। ठीक पर है। घर से तो मसला ही है, घर पे कोई ऑर्डर करने वाला नहीं है और देने वाला नहीं है कुरियर वाले को। मसला ये है नहीं सर, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था। उनको कुछ नहीं करना है बाबू, बस वो रिसीव कर लेंगे वहां पे जाके। ठीक है सर, मैं फिर है ना, बात कर व्हाट्सएप पे लेंगे करता हूँ इंशाल्लाह। आपसे। हाँ, ठीक है बाबू, ठीक है, अच्छी बात। चलिए भाई बच्चों, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।